Good morning, students. Right? Gabbar is back. Okay, so we are going to start with surface tension. It is part of properties of fluids. That means fluid mechanics we are dividing in two parts. Some part is Bernoulli's theorem, velocity of efflux and all that, and Pascal's triangle, and you take different shapes of containers. And if you pour the liquid in that, all the liquid surfaces are same. Means even if I keep the, if it is tilted, suppose this bottle is tilted, right? Still, and if it is made up of glass, that means if it is transparent, I will see the liquid level to be always horizontal. That is one part of fluid mechanics. The second part of fluid mechanics is surface tension, and this surface tension is purely the property of liquids. Surface tension is the property of liquids. Now there are 6 basic definitions which you already know, actually speaking, right? So the first page of your notes, this is a very small, very simple, sweet chapter. There are 3 formulae, and all 3 of them are for surface tension. Symbolically, surface tension will be capital T or capital S, but sometimes capital S is used for surface area. For example, electrostatics. Mechanical force per unit area, dF upon ds is sigma square upon 4 epsilon naught k. So normally we will prefer surface tension to be symbolized as capital T. जब तक बेटा मैं बोलूँ ना बुक्स बना, राइट? और जब मैं पढ़ने का टाइम दूँ, एकदम ज़्यादा ध्यान से पढ़ो, because your weekly 2 exams have already started, right? So Wednesday, even if I want to keep the lecture, I cannot keep the lecture because you are busy studying. Sunday exam is there, right? So many students are asking me, कि sir, can we just watch this lecture as a video lecture? तो बेटा ये lecture conduct करने का कोई फायदा ही नहीं है. इसको करीबन 4 से 5 lecture लगेंगे. अगर आप लोग एकदम ईमानदारी से MCQs और सब solve करके आओगे, तो 4 lecture लगेंगे, नहीं तो 5 lecture लगेंगे, right? तो video lectures तो मेरे पास सारे के सारे ready है. तो फिर ऑफलाइन लेक्चर का मतलब क्या है, राइट? आई स्ट्रांगली इंसिस्ट ऑफलाइन, राइट? जब मुझे लगता है ना कि एकदम थियोरेटिकल आर्टिकल है, अब आगे एक आध टॉपिक में मैंने ऐसा किया था, एक पहला लेक्चर एकदम थियोरेटिकल था, तो मैंने बोला था वीडियो देख के, है ना? तो इसमें ऐसा एक टॉपिक है जो एकदम ज्यादा थियोरेटिकल है. वैसे तो आज का लेक्चर भी थियोरेटिकल है, बट बिकॉज दिस इज द फाउंडेशन ऑफ दिस चैप्टर, वी विल स्टार्ट विद दिस. एज फार एज थर्मल कंडक्टिविटी K part is concerned, heat one, right? Many students told me कि सर एक छोटा सा part बाकी है. Not to worry at all. The way we say current is flowing from a point at high potential to the point at low potential. Likewise, we say heat flows from a point at high temperature to low temperature. In current electricity, you had resistors which were challenging the flow of heat, flow of current. Over here, you have got rods, metallic rods. They will challenge the flow of heat, right? It's very beautifully recorded lecture because previous to previous year, after vectors, I started with independent topic, which was heat. It had no connection with derivatives and integration and all that. You can understand the start of your syllabus. In the very beginning, remember we used to give some questions on hold, saying that wait for derivatives. So that was the time when I deliberately waited for a little bit of foundation maths to start with bio students, and that time I started with heat. So this lecture is very beautifully recorded, okay? And I think in heat book, assignment number 5 is on K. तो मैं वो पूरा का पूरा वीडियो भेजता हूँ. आप लोगों को ये वीडियो कब देखना है? जब आपका एग्जाम हो जाए. अब जैसे संडे एग्जाम हो गया, संडे इवनिंग फ्री है अभी बेटा मई तक, राइट? PCM स्टूडेंट्स आपके एग्जाम जब तक नहीं होते, PCB स्टूडेंट्स आपके एग्जाम जब तक नहीं होते. संडे इज नॉट पार्ट ऑफ योर लाइफ. संडे इज योर रूटीन डे, स्टडी डे. संडे इज योर स्टडी डे. इवन ऑल टीचर्स आर बिजी on all these Sundays up to me, either in the form of doubt solving or revision lectures or talking to parents or form filling and all that. Okay, so please no Sundays, right? After that 4-5 महीने का वैकेशन मिलने वाला है, जितना बोर हो जाओगे वहां तक वैकेशन मिलने वाला है. So K part I am sending it. I just find out that video from my archives and I will post it on Sunday afternoon, right? Sunday morning get free from the exam, Sunday afternoon. It is totally independent topic, totally in conjunction with current electricity, so not to worry. Current electricity you had balanced Stone's network, left upon right is left upon right. So there you had 5 resistors, 1, 2, 3, 4, 5. So when this upon this is this upon this is ignored.
So likewise you will have 5 rods. Okay, when this upon this is this upon this will be ignored. Is that very clear? Resistor opposes current. The word thermal conductivity clearly indicates, it talks about conduction of heat. So the way resistor and spring constant are exactly opposite. Remember, Rs is R1 plus R2, but Ks is K1 K2 upon K1 plus K2. Yes or no? Likewise, even R and C are exactly opposite. Resistors in series, Rs is R1 plus R2. Capacitors in parallel, Cp is C1 plus C2. So you will have concept of thermal conductivity like that, exactly opposite to resistors. So I will post that on Sunday. Is that very clear? ये चैप्टर चलते रहेगा 4 या 4.5 लेक्चर तक, right? So actually speaking, I can take 3 lectures for Bollywood and 3 lectures for Vile Parle next week also, but we will have to minus that Wednesday now. So Wednesday वाला cycle में keep 11th का lecture, so I'll get 2 turns. उसके बाद में शायद मुझे 1 या तो 2 टर्न लगेगा. हाँ, बीच में एक आध वीडियो डेफिनेटली मैं भेज सकता हूँ because it is completely theoretical. Now the first part of this chapter is very basic definitions which you already know from chemistry also. You know that between any two molecules, whether they are of the same type or they are of different types, there always exists attractive force. For example, with the help of a dropper, you put an oil drop on the bench, and little closer to that you put another oil drop. Now get them close. The moment they touch each other, right, they will form a big drop. That means oil plus oil is bigger oil drop. Yes or no? That means there is attractive force between oil and oil, water and water, mercury and mercury. Yes or no? When you take a glass of water, will you ever find water droplets like this? Will you ever find this? Never, no? You will never find a glass of water with water droplets like this, because when they come in contact with each other, they will form a bigger drop, and this will give you continuity in the liquid, right? There is an equation called equation of continuity related to fluids. This is in accordance with that. So the first definition is intermolecular force of attraction. The second definition is cohesive force. Henceforth we will write this as FC. Cohesive force is the intermolecular force of attraction existing between the molecules of the same kind. Example, water, mercury, oil, etc. Adhesive force is the intermolecular force of attraction existing between molecules of different kind. For example, if I pour water on this surface, can I say the bench will become wet? Right? If I use white chalk and if I use a black board and if I start writing, can I say chalk particles will stick to the material of the board? Right now I am writing with ink on a white board. Right? This is some fiber, or this is some crystal, or whatever you take it as, right? Some ceramic plate or whatever. The boards are made of glass also sometimes. So can I say the ink particles stick to this material? That means this material is different, this material is different. So this is called adhesive force. Now these forces are short range forces, and they are effective up to nanometer. That means 10⁻⁹ meter, or else 10⁻⁷ centimeter. That particular distance up to which one molecule can attract the other molecule is called range, or molecular range, or intermolecular range. There are 3 words: range, or molecular range, or intermolecular range. So intermolecular range is denoted as R, and it is approximately 10⁻⁹ meter, or approximately 10⁻⁷ centimeter. That means if I put an oil drop here and if I put an oil drop here, they will not attract each other, right? I will slide them, get them close. For me, when they physically touch each other, then they merge, they combine, they unite. There is the most scientific word which is called coalesce. We came across this word in the chapter work, power, energy. Collisions वाले article में ये आया था. The word coalesce means to merge, combine. Now, human eye can understand approximately up to micron. So we feel that there is a physical touch, they come in contact. But actually speaking, if you go for absolute microscopic view, electron microscope, then they are very close to each other but not touching each other. And after that, they just attract each other like a magnet.
north of one and south of other, when they, they are kept at some distance, and now they attract because this magnet is having a field around it. This magnet also is having a field around it. You can take monopoles also, but you know that magnetism wise, monopoles don't exist. You can cut the magnet, cut the magnet, cut the magnet. So likewise, we feel that they touch each other. Actually, they don't touch each other. When they come in this particular range, they attract each other to form a bigger joint. Then comes sphere of influence. Taking the molecule as the center. Do you see this blue dot? This blue dot is the molecule. Taking molecule as the center, and do you see this length of the arrow? This is the range. This is the range. That means this is the molecule. This is the intermolecular range, which is 10 raised to minus 9 meter. 10 raised to minus 9, 10 raised to minus 9, 10 raised to minus 9, 10 raised to minus 9. And think about the sphere around it. Exactly like Gaussian sphere, chapter electrostatics. You are taking a spherical conductor, that is the main conductor of radius capital R. And then you go for the imaginary surface around it, which is of radius small r. And then you calculate the electric field around it, E equals sigma upon epsilon naught K, bada r square upon chota r square. Yeah, right? Exactly like that. So we are taking molecule as the center and the range as the radius. When we draw a sphere around it, it is called sphere of influence. And finally comes free liquid surface. Free liquid surface is that surface of the liquid which is in contact with air or gaseous medium. Do you see this part of the surface? The topmost, right? Now this is in contact with air, right? It is quite possible that this is a volatile liquid, maybe kerosene, maybe petrol, maybe diesel, maybe benzene, right? Then there is a very thin layer of vapor around it, right? Above it, right? That means this liquid surface is in contact with its own vapor, which is the gaseous form. So the surface of the liquid which is in contact with air, the surface of the liquid which is in contact with air or in contact with the gaseous medium is called free liquid surface. And this particular part is the heart of the chapter. It is this particular part with the help of which we are going to understand this surface tension property. Sometimes students mix up between Archimedes principle and surface tension property. Archimedes principle is law of flotation. You take a wooden block and you put it on surface of water, it floats. That is because of Archimedes principle. See the diagram of your cover page. See your book. See this diagram itself. You can try this experiment at home. Seriously, it's a very simple experiment. Take a pin, take a needle, and or else take a razor blade, and you put it very gently, very gently. If this is the needle and my palm is water surface, I will put it very gently like this, and I will see it floats. Now if you apply Archimedes principle over here, it will fail. Reason, I am taking needle, means I am taking something like a steel or iron. Density of steel is about 7,800 kilogram per meter cube, means approximately 8,000, right? Where density of water is just 1,000. That means steel is 8 times heavier. So as per law of flotation, it should sink, right? So over here there is somebody else who is supporting the needle. If you take little disturbed water, right, after putting this needle, just shake the bottle little bit, or shake the glass of water little bit, or maybe you put some little small crystal, you just drop it so that there is a little turbulence on the surface of water. Now you will see that the needle will sink. Or else, don't put the needle gently like this. Just keep it little above the surface and drop it. When you drop it, it will sink. Right? If you put it this way, it will sink. If you put it this way, it will definitely sink. That means you have to put this needle exactly like this, and it will float like this. That means your cover page is surface of water, and the U-pin which you see, it is made up of steel. It is floating on surface of water, right? That means there is some force which is helping somebody whose density is more than the liquid, still it floats. And that principle is not Archimedes principle. That force is called force due to surface tension, which we are going to talk about. Right? That force is called force due to surface tension. And what is this force due to surface tension? To understand that, first we have to understand what is free liquid surface. So what is free liquid surface?
free liquid surface is that surface of the liquid which is in contact with air or in contact with its own vapor. What is free liquid surface? Free liquid surface is that surface of the liquid which is in contact with air or in contact with its own vapor. And this free liquid surface, now onwards, I will write it as FLS throughout. FLS, free liquid surface. This has two very important properties. One, it always behaves like a stretched elastic membrane. It always behaves like a stretched elastic membrane. Now what do I mean by stretched elastic membrane? You're going to hold this very tight. Okay? You're going to hold this very tight. Corner 1, corner 2. Okay? You are going to drop this on the surface of it. Okay? Hold it very tight. I am also holding it very tight. Upar, horizontal hona chahiye. हाँ, drop it. Right? Now when this heavy body is dropped on it, there will be a little dent over here. Wherever it is dropped. Yes or no? Our solar system is like this. Our solar system is like there's a fabric and these heavy planets or heavy stars are on it, so there is a dent. Right? And that leads to the concept of time travel. That leads to the concept of why these planets revolve in circular orbits or elliptical orbits. So, once again, this is a stretched membrane. Okay, Upar. Okay, and this is some needle or blade which is floating on surface of it. So this behaves like a stretched elastic membrane. And this yellow membrane which you see right now is a free liquid surface. Thank you. Right? This is one property. We are going to understand some examples on the basis of this. This is water spider. Very clearly I have mentioned the diagrams are not according to scale. That means this is a very small insect which is walking on surface of water. Right? That means it is not because of the law of flotation. It is because some force which is existing at the free liquid surface, on the free liquid surface, is helping the insect to walk. Right? Now when the insect is walking, and if you spray little DDT powder on it, sprinkle on it, or if you spray some solution on it, right, then this particular insect will experience less force. The surface tension force will reduce, which was supporting this insect to walk. And after some time, the legs of the insect will go little inside. That means the insect has started sinking unknowingly. If the insect comes to know, it will flat. But by the time it comes to know, it has already started sinking. And now the porous part of the body will come in contact with the liquid. And then the pores will start filling up with the liquid, and then the respiratory system will fail. So out of suffocation, the insect will die. Okay, so basically there was somebody who was supporting this insect to walk. If you and me try to walk on the surface of water, we cannot because we are very heavy. Secondly, this force due to surface tension is a short range force, as I said. In next experiment, in next 15 minutes, I am going to prove that why it is a short range force. That means these insects can walk only when their legs are within a very small film. This is that film. And the thickness of this film is this. And the thickness of this film is this. That means if the legs of the insect go below this, little below this, you can understand how small this distance must be. It is 10⁻⁹ meter. Then the insect will die. So this is behaving as a stretched elastic membrane. That means wherever the legs of the insect are there, it is like I'm putting this ring or on this liquid surface at different distances, or maybe I'm taking multiple rings, एक ring इधर रखा है, एक ring इधर रखा है. So wherever those rings are there, those are dents. So wherever the legs of insects are there, or insect are there are dents. So this is behavior of a free liquid surface as a stretched elastic membrane. Another very beautiful experiment. You can try all these experiments, or you are observing these experiments around you in day-to-day life. Take a ring and take a thread. Let me call this thread as AB. Let me call this thread as AB. Length of this thread should be slightly more than the diameter of the ring. I repeat, length of this thread should be slightly more than the diameter of the ring.
Now, if this is that ring and if this is that thread, after tying the thread, I will immerse this ring in a soap solution. And the moment I take it out, I will see a soap film. बचपन में आप लोग एक गेम खेलते थे. You used to have a cylinder, you have to have a soap solution, you had to have a ring, you had a straw, you used to dip the ring, and then you have to blow air. And the soap bubbles used to come out. Now these soap bubbles are always spherical, you have seen that. Have you ever seen cylindrical bubbles? Have you ever seen cuboids? Have you ever seen conical bubbles? No. Because sphere, geometrically, is the one which is having minimum possible surface area. You can try this experiment also at home. Take some amount of clay. Take some amount of clay, say 100 gram. और उसमें से आप अलग अलग फिगर्स बनाना शुरू करो, 3 डायमेंशनल फिगर्स. पहले क्यूबॉइड बनाओ, फिर उसका लेंथ मेजर करो. मतलब आपको एरिया और वॉल्यूम दोनों मिल गया. एरिया इज 6L स्क्वायर एंड वॉल्यूम इज L क्यूब. फिर आप रेक्टेंगुलर क्यूबॉइड बनाओ. पहले क्यूब बनाया, फिर क्यूबॉइड बनाया, रेक्टेंगुलर बॉक्स. वॉल्यूम विल बी LBH. एरिया विल बी ट्वाइस LB प्लस ट्वाइस BH प्लस ट्वाइस LH. वापस उसको डिफॉर्म करो. माइंड यू, आपने 100 ग्राम क्ले लिया है, मतलब आपने 100 ग्राम क्ले ही लिया है. Neither you are adding something nor you are subtracting something. That means you are keeping mass constant. Now we know that mass is density into volume. Are you changing the material? No. Are you changing the mass? No. So volume should not change. So volume will remain same throughout. अगर आपने कॉलम बनाया वॉल्यूम, दूसरा कॉलम बनाया एरिया, और रो में आपने लिखा क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, स्फीयर, कोन, सबके वॉल्यूम्स लिखो, मेजर करो, वॉल्यूम सबका एकदम डिट्टो सेम आएगा. अभी सबके एरियाज लिखो. एरिया ऑफ अ क्यूब इज 6L स्क्वायर, एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड इज ट्वाइस LB प्लस ट्वाइस BH प्लस ट्वाइस LH, एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज 2 pi r bracket r plus h. Right? When you calculate all the areas, you will see that the sphere is having minimum possible area. That is in fact the reason of shape of the atoms. That is in fact the reason of the shape of the planets. That is in fact the reason of shape of the drops. Have you ever seen drops? Now mark my language. I am using the word soap bubble because it's a hollow sphere. But I am using the word mercury drop because it's a solid sphere. I am using the word oil drop. I am using the word water drop. Right? So drop is a solid sphere. Area is 4 pi r square. हॉलो स्फीयर का भी एरिया वही है 4 pi r square. सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं हम लोग. आर यू गेटिंग दिस? माइंड यू, इफ आई मेक अ क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, स्फीयर, कोन, if I calculate all the volumes, answer will be the same. Why the answer is the same? Density is mass upon volume, so volume is mass upon density. I am taking constant mass. I am not changing the material also, so volume will remain the same, but area will not remain the same. And that is the reason the free liquid surface will always try to occupy minimum possible area. Now let us take this experiment. Very simple experiment, as I said. You can try this at home. I am taking a ring. Maybe I can take this ring. I know the diameter of this ring. I will take a thread as thin as possible. ये जो कपड़ा सिलने का धागा होता है ना, वो लेने का. And you tie that thread. Obviously, the length of the thread is more, so it will be zigzag. It will not be taut. It will be slackened, right? Now you dip this in soap solution. Take it out. So you will see a liquid formation like this. What is this blue shaded part? Soap film, right? What is this AB thread? Is it straight? Absolutely no. It is zigzag, right? Now what you do is you take a red hot pin, take a needle, put it on the flame, let it become hot for some time, and very gently you just pierce the film on any one side. If you pierce it on this side, check the thread is stretched on this side. The thread is not like this. It's not happening that this particular soap film is gone because you pierced it and this shape remains. No, now the thread will not be zigzag. Now the thread will be taut. Now see what is happening. सोच के बोलना बेटा. ये सब जो blue वाले ना, ये सब soap particles हैं, right? So can I say there is soap attraction? Soap attraction, soap attraction, soap attraction, soap attraction, soap attraction. Which force? Coercive force. Can I say there is soap thread attraction? Soap thread attraction, soap thread attraction.
Likewise on right side, soap thread, soap thread, soap thread. Which force? Adhesive, na? This time adhesive. Out of cohesive and adhesive, which force is powerful? Cohesive, exactly. So when I break this film, soap attraction is powerful, ki soap thread attraction is powerful? Exactly. So this soap particles, they want to remain together. So what is happening? This arrow which you see, this arrow, it is the force. This arrow which you see, it is force. Force. Imagine you had not taken this thread. This thread was not there only. Can I say there was only soap film? And all the soap particles, they wanted to stay together. Because of which force? Cohesive force. But because you have taken thread, that means now there is a combination of adhesive and cohesive force. Right? Out of adhesive and cohesive, who is powerful right now? Cohesive force. अब ये वाला force मैंने निकाल दिया. तो अभी ये force is है ही नहीं. तो सिर्फ ये force is dominant है. तो they will pull the thread on that side. इसका मतलब this is happening. 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 It is so simple as this. Pull this. One molecule, balanced. Suppose second molecule, balanced. Suppose third molecule, balanced. Like a game of tug of war, right? Now pull this. I give up. That means this gives up. That means the thread is pulled on his side. Because अभी सिर्फ यही force है. समझा? ये force है. On the left side of the thread, मतलब ये वाला. ये force है. On the right side of the thread. अभी मैंने right side film break किया है. That means the thread is pulled on the left side. Is that clear? That means somebody is doing this. Who is doing this? The cohesive force between the liquid molecules. Who is doing this? Cohesive force between the liquid molecules, because that becomes dominant, and therefore, can I say, I will see the film only here. I was expecting कि ये thread ऐसा था और यहाँ पे भी soap molecules होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है. Yes or no? This particular force is called force due to surface tension. This particular force is the property of the liquid, because liquid molecules are doing this, right? So this is occupying minimum possible surface area. Another very beautiful example to prove this. Take a painting brush and take a container which is transparent. Take water in it. Take potassium permanganate solution, take potassium dichromate solution, whichever you want. Only thing is, the blisters should be visible. You are taking painting brush. You are not taking toothbrush, because painting brush में these hairs are very very light in weight. Mark my sentence. मैंने बोला था कि this force is a very poor force. This force is a very poor force. So the bristles are hard enough not to come close and get stuck. But if you take the painting brush, right, when it is inside, these hairs are so thin that because of the mobility of the liquid molecules, these hairs will go here and there. Imagine yourself, you are swimming. Imagine you have gone for scuba diving. Imagine you are recorded, right? Imagine you have not worn the helmet. If you have hairs, they will go here and there. Don't look at me, idiots. Yes, so they will go here and there. But the moment you come out of water, are they stuck? Are they stuck? So what is happening when you are inside? The liquid molecules were moving. Your hairs are much lighter, so they are easily dominated by these liquid molecules. But the moment you come in air, that means now liquid drops, they behave like free liquid surface. Because now, imagine I am taking a water drop here and I am taking a water drop here. Can I say this is inside the liquid and this is on the surface of the liquid? So because it is on the surface of the liquid, that means it is in contact with air. That means this is on free liquid surface. Yes or no? So when the painting brush was inside, these hairs were away from each other. But the moment I take it out, can I say these hairs are stuck to each other? Why? Because there is adhesive force between. अंदर जब ये था, तो कौन सा force dominant था? Cohesive, super dominant था. मतलब adhesion था तो कोई existence ही नहीं था.
the hairs were dominated by liquid molecules. Right? It was not that the liquid molecules were disturbed by the hairs of the painting brush. The hairs of the painting brush were disturbed by the liquid molecule. The moment they come out, that means there are water droplets stuck on the hairs. Now there are two forces: hair water, water water. Who is more dominating? Water. Exactly. So these water molecules, they want to stay together. Hairs are very light in weight, so they are dominated. So when you are inside water, your hairs are going here and there. But the moment you come out, your hairs are stuck together. And then you do this. Yes or no? To throw those water droplets out of hair. Are you getting this? Right? So this is again explaining us that it is occupying minimum possible surface area. जब बेटा टेक्स्ट बुक में आप ये सब आर्टिकल्स पढ़ोगे ना, ये कोई डायग्राम्स नहीं दिए होंगे, मतलब आप ये रट्टा मारते हो, ऐसा कुछ होता होगा. But now these are the real life examples which either you can perform at home, right? You can literally try needle wala experiment at home. You can try this experiment at home and this will happen. Yes or no? So this example explains me. This example explains me that it tries to occupy minimum possible surface area. This example explains me this tries to occupy minimum possible surface area. This example explains me this behaves like a stretched elastic membrane. When you take camphor ball and if you put them on surface of water, give a gentle push, they will start dancing. Right? So dancing of camphor balls is again the example of surface tension. Take a straw. Take a straw. This is real life example, and knowingly or unknowingly you must have performed it also. Take a straw, take some cold drink, open the bottle, put a straw inside. Can I say the liquid enters the straw? Right? Now what you do is, you put your fingertip on the straw. So some liquid is trapped. Now you take the straw out. That liquid is trapped only. Check. ये straw है ना? ये straw है. और ये liquid है. ये liquid है. आपने ये straw इधर डाला. So obviously the liquid has entered. Close it. Put your fingertip over here. That means this particular part is closed. Can I say the liquid is trapped over here? अब ये हटा लो. Now this will escape because of gravity. तो gravity तो पहले भी act कर रहा था ना? Gravity तो पहले भी act कर रहा था. But because you have enclosed this portion, this air, that means there must be some pressure which is not allowing this to escape. There must be some force. Yes or no? So when you want to transfer liquid from burette to another burette, you are using pipette and you are doing this. Are you getting this? This is called capillarity. This is called capillarity, and this capillarity is also because of surface tension force. Imagine there are very tall trees, and imagine the water portion is going from the soil up to the upper branches of the tree. Right? Your body is functioning like this. Your heart is here. Right? It's not that the blood is going only to the downward organs. Right? The blood is going to the brain also. That means your arteries, your veins, they are all capillaries. Right? Your eyeballs also. Sometimes some dust particles go in it. Right? And when you do this, you see red. Those capillaries, they become very prominent. Right? Because that blood flow is very prominent. Are you getting this? So capillarity is happening in our body. If capillarity is not there, that means, the gases in a desired amount which are required, oxygen gas should reach your brain, proper oxygen supply should be there, which is again a fluid, right? Basically, the name of this chapter is fluid mechanics. Fluids are the substances which can flow. So gases also come under this category. Surface tension is exclusively for liquids. Liquids can flow, gases can flow, solids cannot flow. Solids are immobile. You have to apply force to move them. Right? Liquids and gases can move. They are mobile. So surface tension is specifically the property of liquids. Right? मैंने जो basic definitions बोला सब समझा. Right? Now with the help of two examples, we are going to prove those properties also. I told you surface tension का 3 formula ये chapter में 3. एक फोर्स के टर्म्स में है, एक वर्क के टर्म्स में है. एक सिंपल बात बोलता हूं, ये दोनों फॉर्मूला आप लोगों ने सिमिलर टाइप देखे हुए हैं. हैव यू नॉट सीन df upon ds as sigma square upon 2 epsilon naught k, राइट? या तो हाफ के epsilon naught e square देखा है. इसी को याद करो, आपने du upon dv भी बोला था. अब ये कैसे आया था?
फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज वर्क एंड वर्क इज एनर्जी। अगर मैंने इसको dx से मल्टीप्लाई किया तो मैंने इसको भी dx से मल्टीप्लाई किया, राइट? तो एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट इज वॉल्यूम। तो बेटा du by dv का भी तो वही फॉर्मूला था, यस और नो? मतलब अपना एक आंसर फोर्स के टर्म्स में आने वाला है और अपना एक आंसर एनर्जी के टर्म्स में आने वाला है, मतलब वर्क के टर्म्स में आने वाला है, यस और नो? वेरी ब्यूटीफुल फॉर्मूले, एब्सोल्युटली इंटरेस्टिंग एमसीक्यूज, राइट? मैं जो होमवर्क दूंगा ना, ट्रस्ट मी, इट विल बी 45 मिनट्स टू 1 आवर। भले संडे कोई भी एग्जाम है, जो भी है, ऑन गोइंग चैप्टर को अगर एकदम फटाफट रिवाइज करना है ना, मैं जितना होमवर्क देता हूं बस उतने एमसीक्यूज करके आओ, बिकॉज़ इफ यू कैन क्रैक द एमसीक्यूज मींस यू अंडरस्टूड दैट लेक्चर, राइट? if 20% 25% MCQs are not solved by you, it is okay, absolutely okay, because they are tough, you will need me there, right? But whatever MCQs I give, you have to solve and come, and I will give you MCQs type wise. Your assignments are made like that, very beautifully type wise. इतना पार्ट समझा? अभी तक मैंने बोर्ड पे जो भी ड्रॉ किया समझा? जब आप इसका सेकंड पेज पढ़ोगे, फर्स्ट पेज इज स्कोप एंड लिमिटेशंस व्हिच इज फॉर टीचर्स, मींस हाउ मच वी हैव टू टीच फ्रॉम दिस चैप्टर सिलेबस वाइज। सेकंड पेज में एकदम नीचे आपको 4 एग्जांपल्स दिखेंगे, ये उसके डायग्राम से अगर बनाने हैं तो, राइट? आर यू ऑन चैप्टर सरफेस टेंशन, पेज नंबर 1 एज यू सी स्कोप एंड लिमिटेशंस, पेज नंबर 2 डू यू सी 6 डेफिनेशंस, राइट? ऑन द राइट साइड डू यू सी वन डायग्राम? एकदम लेफ्ट वाला डायग्राम क्या है? यू हैव नॉट पियर्स्ड द फिल्म। मिडिल वाला डायग्राम क्या है? You must have broken the film on the right side, so the thread is put on the left side. Third diagram क्या होगा? वो जो मैंने नहीं बनाया, लेकिन उधर है, right? आपने वो फिल्म को लेफ्ट साइड पे ब्रेक किया होगा, that means the thread must be pulled on right side. अब आपको पेज नंबर 2 पे वापस जाओ, एकदम नीचे देखो आपको 4 एग्जाम्पल्स दिख रहे हैं वहाँ पे। Insects walking on the surface of water, camphor balls dancing. When you put an iron needle or steel needle very gently on the surface of water, it floats. That means it is not law of flotation, it is not Archimedes principle. There is somebody. Who is that somebody is going to be our next target? Yes or no? And how is that somebody acting? Up to what distance that somebody is acting? In which direction it is acting? We are going to talk about that. And then we will talk about the definition in 2 possible ways. As I told you, अगर आपको टाइप्स देखना है ना बेटा, एकदम क्लियरली बोल रहा हूं, आप एक बार पेज नंबर 17 पे आ जाओ, बराबर? आपको पहले 3 फॉर्मूले देखो सरफेस टेंशन के लिखिएगा। पहले फॉर्मूला में फोर्स दिख रहा है और कुछ मत देखो, खाली फोर्स दिख रहा है। दूसरे फॉर्मूला में आपको E दिख रहा है, E मींस एनर्जी या तो W मींस वर्क, और तीसरे फॉर्मूला में आपको H दिख रहा है, H का मतलब होता है कैपिलरी राइज या तो कैपिलरी फॉल। अगर आप एक कैपिलरी ट्यूब लेते हो और लिक्विड केरोसिन लेते हो तो केरोसिन विल राइज, लेकिन अगर लिक्विड मर्क्यूरी लेते हो तो मर्क्यूरी विल फॉल, राइट? सो H का मतलब कैपिलरी राइज भी है और कैपिलरी फॉल भी है। एवरीबॉडी हियर, अगर ये सरफेस ऑफ लिक्विड है और अगर मैंने केरोसिन लिया तो केरोसिन मुझे ऊपर की साइड पे दिखेगा, सपोज 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर इज कैपिलरी राइज। लेकिन अगर मैंने मर्क्यूरी लिया और उसमें कैपिलरी ट्यूब डुबाया तो ये शायद मुझे 1 मिलीमीटर या तो 1.5 मिलीमीटर नीचे दिखेगा, दैट इज कॉल्ड कैपिलरी फॉल। तो कैपिलरी राइज मींस पॉजिटिव वैल्यू ऑफ H एंड कैपिलरी फॉल मींस नेगेटिव वैल्यू ऑफ H। आपको तीनों फॉर्मूले में लेफ्ट साइड सेम दिखेगा, देखो T, कैपिटल T, डू यू सी दैट? First formula is also of capital T, second formula is also of capital T, third formula is also of capital T, and now I want you to come to page number 18. Type A, Type B, Type C में clearly लिखा हुआ है problems on T, either it is W upon E या तो E upon E. Problems on T again, it is F upon F. अभी जो third type है ना problems on capillary action, उधर formula नहीं लिखा है, आप लिख लो बाजू में T is equal to RH rho G upon 2 cos theta। मतलब ये पूरा चैप्टर, ये 3 फॉर्मूला, very very interesting problems, and trust me, for PCM students and PCM students it is such an important concept, क्योंकि आपकी बॉडी में एक्ट करता है। आपके बॉडी का फ्लूइड प्रेशर थोड़ा भी इधर उधर हिला ना, cerebrospinal fluid, हाँ, sometimes it happens to you,
ब्लड प्रेशर राइज हुआ है तो ब्लड प्रेशर फॉल हुआ. व्हाट इज ब्लड अल्टीमेटली? इट्स अ लिक्विड, राइट? सो दैट इज गोइंग टू स्क्रू अप योर बॉडी, राइट? यूरिन प्रेशर, राइट? यूरिनरी ब्लैडर, फॉर एग्जांपल आपको जब भी यूरिनेशन की फीलिंग आती है, नेवर होल्ड इट, राइट? Just clear the bladder as fast as possible because it is not good for your kidney. When you hold it for a long time, it is not good. That means again it's a fluid pressure. Are you getting this? So these fluid pressures are very, very important for animals, plants, everything, right? If there is no proper supply of water from the soil to the upper branches of the tree, they wither away. You know that. Yes. So very interesting topic. Very, very important for living and non-living. Because this concept is used in refineries also. There are proper levels up to which the liquid should rise, not beyond that. Otherwise, it is harmful for the machine, right? So, page number 2 and upper part of page number 3, ekdam dhyan se. We will pause the video. Pause and stop it. Chalo beta, books band. Now, surface tension on the basis of microscopic theory or molecular theory. As you see, I have taken a liquid in a beaker and I am choosing 3 molecules. Molecule number 1, let me call this as molecule A. Molecule number 2, let me call this as molecule B. And molecule C. Observe something. This molecule is completely inside the liquid. This molecule is very close to the free liquid surface but not on the free liquid surface. And this molecule is on the free liquid surface. I repeat, this molecule is well inside. How will I come to know this molecule is well inside? Because if this was the molecule and if I try to draw SOL around it, can I say this will be SOL, sphere of influence? So what can you say about molecule A? Can I say the sphere of influence is completely inside the liquid? So what can you say about the net force on molecule A because of the neighboring molecules? Will it be equal and opposite? अगर ये molecule ये side पे attract हो रहा है, तो ये side पे भी attract हो रहा है. ये side पे attract हो रहा है, तो ये side पे भी attract हो रहा है. आगे attract हो रहा है, तो पीछे भी attract हो रहा है. That means the net force on this molecule is 0. Yes or no? But what about this molecule? ध्यान से देखो बेटा. 1, 2, balanced. 3, 4. Is it completely balanced? No. Because this portion of sphere of influence is in air. अभी सोच के बताओ. Liquid attraction powerful कि liquid air attraction powerful? Liquid, very good. Reason, अगर बेटा liquid air attraction powerful होता, so if I pour some liquid in a container, वो liquid मुझे ऐसा दिखना चाहिए था. इसका मतलब ये हुआ कि these liquid molecules are more attracted towards air rather than liquid. मतलब अगर मैं ये molecules को लूं तो इसका इन्फ्लुएंस इसके इन्फ्लुएंस से ज्यादा हुआ, ऐसा हुआ ना, अगर मुझे लिक्विड ऐसा दिखता तो. लेकिन मुझे पता है कि इसका इन्फ्लुएंस इसके इन्फ्लुएंस से ज्यादा है. Yes or no? So as you said correctly, this molecule is not completely inside the liquid. Arrows का साइज ध्यान से देखना. This arrow and this arrow are they equal in size? No. कौन सा एरो का लेंथ ज्यादा है? नीचे वाले का. अभी इसको देखो 1, 2, 1, 2. कौन से एरोस का साइज ज्यादा है? नीचे वाले का. अभी मैं ऑब्लिक वाले वेक्टर्स ले रहा हूं. ऑब्लिक वाले जिसको मैं नंबर कर रहा हूं उसको ध्यान से देखो. 1 and 2. तो उसका रिजल्टेंट किधर आएगा? वर्टिकली डाउनवर्ड्स. अगर मैं और दो लेता 1 and 2 मतलब सपोज 3 and 4 तो उसका भी एरो वर्टिकली डाउनवर्ड्स ही आता. बराबर ना? 1 and 2, 1 and 2, 1 and 2. According to parallelogram law of vectors, बेटा मेरा रिजल्ट एंड आंसर नीचे ही आएगा. Yes or no? तो can I say for molecule B the net force is acting? No. Net force is acting? Vertically downwards. When I am asking you again means I am not convinced. Vertically downwards. Very good. Vertically downwards. समझा बेटा? Sure. A और B में हम लोगों ने बोला इसके ऊपर नेट फोर्स इज 0, इसके ऊपर नेट फोर्स इज 0, इसके ऊपर नेट फोर्स इज नॉट 0. इट इज समथिंग. एंड वेयर इज दैट फोर्स एक्टिंग? वर्टिकली डाउनवर्ड्स. अब अगर ये सिचुएशन है तो व्हाट कैन यू से अबाउट मॉलिक्यूल सी?
कैन आई से ये इसको बैलेंस कर रहा है, बट व्हाट अबाउट दिस, ये तो थोड़ा भी बैलेंस कर रहा था, ये तो बिल्कुल बैलेंस नहीं कर रहा है. व्हाट अबाउट दिस, इसको थोड़ा बैलेंस कर रहा था. ये लास्ट बेंच स्टूडेंट्स, डायग्राम विजिबल, इसको थोड़ा भी बैलेंस कर रहा था, बट व्हाट अबाउट दिस, इट इज नॉट बैलेंस. So can I say net force on molecule C is also not zero, is also acting vertically downwards, and magnitude wise it is maximum or minimum? Maximum. Proud of you, very nice. Can I say therefore if I select all the molecules on the surface of the liquid, they will have maximum impact. How is that force acting downwards? इसका मतलब ये हुआ. Now try to visualize because now you will understand what is happening. इधर आ जाओ. You are going to hold this very tightly. Huh? Hold this and this very tightly. If possible, get up please. Sudhanshu, get up. नहीं, उसको पकड़. अभी इसको पकड़ खाली. It should be perfectly horizontal, both of you. अब मैं ये मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ, ये और ये मॉलिक्यूल ऐसा इन्फ्लुएंस हो रहा है. मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ऐसा इन्फ्लुएंस हो रहा है. इसकी बात कर रहा हूँ, ऐसा इन्फ्लुएंस हो रहा है. Am I talking about all these molecules? So is it behaving like a stretched elastic membrane? Is that clear? And therefore stretching as much as you can. Okay. Therefore it is trying to compact to minimum possible area. अब वो कंटेनर के एडेसिव फोर्स की वजह से उसको चिपक के रहेगा. That is okay. But can I say it is still trying to occupy minimum possible area? And is it behaving like a stretched elastic membrane? मतलब वहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ बोला था, thank you. वहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ बोला था कि it is occupying minimum possible surface area. इसके एग्जाम्पल से प्रूव किया था. But now we are talking about the actual mathematics of it. Vector mechanics. Are you getting this? Why this is behaving like a stretched elastic membrane? So where is this force maximum? On which molecules? On the molecules where inside? Closer to the surface? On the surface? Surface. The word tension is force. So it is surface tension force. And how is it acting? Vertically downwards. Don't say downwards, okay? Say vertically downwards. हम लोग जब gravity की बात करते हैं हम लोग बोलते हैं vertically down. The body is falling vertically. It's not going in an oblique way. Right? So when you were saying downwards, I was asking the question again. Why? Because I wanted that perfect word. It is acting vertically downwards. So how is the force due to surface tension acting? It is acting vertically downwards. Another point to be noted. Is this the surface of the liquid? So can I say this force is acting at right angles to the surface of the liquid? तो अभी और ज़्यादा perfection आया अपने definition में. How is force due to surface tension acting? It is acting vertically downwards. If you are talking about surface like this, or else it is always perpendicular to the free liquid surface. It is always perpendicular to the free liquid surface. Is that clear? अब बेटा ये vertically downwards नहीं था ना? ये तो मेरा diagram vertical था. तो अगर ये curve है, तो मैं यहाँ पे tangent बना सकता हूँ. अगर ये कर्व है तो मैं यहाँ पे टेंजेंट बना सकता हूँ. तो ये फोर्स फिर एट राइट एंगल्स एक्ट करेगा. राइट. सो व्हाट इज द एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ द फोर्स? इट इज एट राइट एंगल्स टू FLS. इट इज एट राइट एंगल्स टू FLS. वर्टिकली डाउनवर्ड्स हम लोग इसलिए बोले क्योंकि हम लोगों ने लिक्विड वैसे लिया हुआ है. यस और नो? नाउ अप्लाई कॉमन सेंस. मैं आपको 3 अलग-अलग वेसल्स देता हूँ. I am giving you a capillary tube. हाँ, सोच के आंसर देना. I am giving you a capillary tube. Then I am giving you a test tube. And then I am giving you a bucket like this. Right? मतलब यहाँ पे ये लिक्विड है. यहाँ पे ये लिक्विड है. और यहाँ पे ये लिक्विड है. राइट. तो आपको क्या लग रहा है कि कौन से डायग्राम में सरफेस टेंशन फोर्स ज्यादा होगा? फर्स्ट में, सेकंड में कि थर्ड में? सेकंड तो ऑब्वियसली नहीं होगा क्योंकि मुझे एक्सटेंस तो फर्स्ट और थर्ड ही दिख रहे हैं. एनी लॉजिक? फर्स्ट की थर्ड? सिंपल एग्जांपल देता हूं पहले. मी एंड निशिता प्लेइंग दिस गेम. टग ऑफ वॉर. one person. That means this rope is experiencing some force. She is in my team. He is in his team.
2 2. This will experience more force than before ki less than before? Exactly. My party, his party. More ki less? More. So as the number of students increase, this experiences more force. Thank you. अब बेटा आपको ये लिक्विड मॉलिक्यूल्स काउंट करना है. सपोज इधर 10 मॉलिक्यूल्स है, इधर 100 है और इधर 1000 है. लिक्विड सेम है, ये भी वाटर है, ये भी वाटर है, ये भी वाटर है. आपको क्या लग रहा है सरफेस टेंशन फोर्स कहाँ पे एक्ट करेगा? ऑब्वियसली जहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा है. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कहाँ पे ज्यादा होगा? जहाँ पे सरफेस एरिया ज्यादा होगा. अभी मैं इतना सा सरफेस ले रहा हूँ तो मैं कितने मॉलिक्यूल्स एडजस्ट कर पाऊंगा सरफेस पे? Moral of the story. Listen to this very carefully. Can I say more the number of molecules? Can I say more the number of molecules? Can I say this will imply more the force, more the magnitude of the force, right? And now I want to get the first formula. I told you this entire chapter is based on 3 formulas. So we are heading towards the first formula, and our first formula is in terms of force. Now listen to this carefully. Force is directly proportional to L, and this L is very important. ये L का मतलब है effective length in contact with the liquid. Effective length in contact. Effective length in contact of free liquid surface. Of free liquid surface. Try to understand this. This is very important. अगर बेटा मैंने ये 3 कंटेनर में से लास्ट वाला लिया, क्योंकि आप लोगों ने बोला ना वहां पे मॉलिक्यूल ज्यादा है, तो अगर मैं उसको 3 डायमेंशन में विजुअलाइज करूंगा तो ये फ्री लिक्विड सरफेस मुझे ऐसा दिखेगा. अब यहां पे मैं एक थ्रेड ले रहा हूं. थ्रेड, ये मैंने थ्रेड लिया, बराबर. अब ये थ्रेड को ये वाले लिक्विड मॉलिक्यूल्स भी अट्रैक्ट करेंगे, ये वाले लिक्विड मॉलिक्यूल्स भी अट्रैक्ट करेंगे. दैट मींस द थ्रेड इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ force on either sides of it. Yes or no? Because I have not taken this, because I have taken this, I can see more number of molecules. If I switch over from third diagram to second diagram, can I say this part will reduce? So the number of force vectors will reduce. If I go from third part to first part, मेरा diagram इतू सा होगा. Yes or no? So can I say more the number of molecules, more the magnitude of the force? Now this part is very important, and that is L. ये बीकर है, तो बीकर का जो टॉपमोस्ट सरफेस है उसका पेरीमीटर क्या है? क्योंकि मैं लेंथ बोल रहा हूं, मैं एरिया नहीं बोल रहा हूं, इसलिए मैंने पेरीमीटर वर्ड बोला, एरिया नहीं बोला. एरिया होता तो मैं पाई स्क्वायर बोलता. व्हाट इज द लेंथ? एग्जैक्टली. तो मैं इतना एरिया ले रहा हूं, फिर इतना एरिया ले रहा हूं, फिर इतना एरिया ले रहा हूं. कैन आई से एवरी टाइम इट इज 2 पाई? फर्स्ट में इट इज लीस्ट 2 पाई, last में it is most to 2 pi. I want most to 2 pi because I want maximum number of molecules. So I will select first diagram, second diagram, third diagram. If I want to increase the magnitude of the force, third. If I want to reduce the force, then first. Yes or no? Can I say more the molecules, more the force, less the molecules, less the force? That means more the length, more the force. अब ये length सबसे ज्यादा important है बेटा, सबसे ज्यादा. ये एक बार समझ में आ गया ना? Trust me, the things are very simple, because now we know that if we want to remove the proportionality sign, we have to assign some constant, and obviously our constant is going to be the title, the name of the chapter. F is proportional to L, therefore F is some constant of proportionality times L, and this constant of proportionality is F upon L. Yes or no? First formula आ गया, first formula आ गया, chapter का first formula. And I am going for definition also, and then we will talk about different effective lengths. If ये जो ग्रीन कलर का लाइन है ना, इसको बोलते हैं इमेजिनरी लाइन. मतलब आप इधर नीडल रखो नहीं रखो कोई फर्क नहीं पड़ता है. जस्ट थिंक अबाउट अ लाइन, वर्चुअल लाइन, imaginary line drawn in the plane of free liquid surface. What is it? Imaginary line drawn in the plane of free liquid surface. ये ग्रीन वाला लाइन. ये जो रेड वाले वेक्टर्स आपको दिख रहे हैं, ये कौन है बेटा? What are these red vectors?
Force due to surface tension, because where is this force acting? On the surface of the liquid. On whom this force is acting? On the thread. Or if suppose the thread is not there, that means there is some thin imaginary line, right, which is easily dominated by these liquid molecules, right? Now apply common sense. If length chosen by me is 1 meter, then can I say T is equal to F? Yes or no? डेफिनेशन के लिए हम लोगों को राइट साइड पे एक ही बंदा चाहिए, राइट साइड पे गिन के 2 ही थे, तो हम लोग नॉर्मली न्यूमरेटर को बचा के रखते हैं, डिनोमिनेटर को 1 बोलते हैं, राइट? राइट हैंड साइड पे जितने भी एक को बचा के सबको 1 बोलो, दैट इज हाउ वी डिफाइन इट. Surface tension of the liquid is defined as the force acting per unit length at right angles on either sides of an imaginary line drawn in the plane of the free liquid surface. ये बेटा दिखने में एकदम सिंपल फॉर्मूला दिख रहा है और है भी, कैलकुलेशन वाइज भी ये सिंपल प्रॉब्लम्स है, लेकिन डेफिनेशन थोड़ा लंबा चौड़ा है. ध्यान से सुनो. Surface tension is defined as the force acting per unit length at right angles on either sides of an imaginary line drawn in the plane of the free liquid surface. One by one देखते जाने का और अपना जर्नी डिसाइड करने का. Surface tension is defined as force acting per unit length. नहीं रिकॉर्ड करना है, समझ नहीं आ रहा है. नहीं मैं आवाज बता रहा हूँ. हाँ. So surface tension is defined as force acting per unit length at right angles on either sides of an imaginary line drawn in the plane of the free liquid surface. You try. आराम से वन बाय वन एक एक वर्ड कैच करो. Surface tension is defined as the force acting per unit length at right angles on either side of the imaginary line drawn in the plane of the free liquid surface. इसके ऊपर बेटा थियरी क्वेश्चन आता है और चारों जो ऑप्शंस देते हैं उसमें एक एक वर्ड गायब कर देते हो लोग. किधर से पर यूनिट एंड वर्ड गायब कर दिया, किधर से एट राइट एंगल्स गायब कर दिया, राइट? तो यू हैव टू व्हेन इट इज अ थियरी क्वेश्चन यू हैव टू बी मोर केयरफुल. प्रॉब्लम्स में क्या एक बार नंबर मैच नहीं हो तो हम लोग थोड़ा रीट्राई कर सकते हैं. थियरी में आइदर यू नो दिस और यू डोंट नो दिस, राइट? वन मोर टाइम, लास्ट टाइम, कम ऑन. Surface tension is defined as the force acting per unit length at right angles on either side of the imaginary line drawn in the plane of the free liquid surface. So beta, can I say the unit is very easy? Can I say the unit is Newton per meter? Is it similar to spring constant, force constant, chapter oscillation, chapter work, power and energy? Is it similar to force constant या तो spring constant? What about the dimensions? What about the dimensions? This is F upon L. F is Newton. F is Newton. Kilogram meter per second square upon meter, meter gone. It is kilogram per second square. So can I say this M1 L0 T minus 2? Yes or no? Can I say this is the property of a liquid? And because it is the property of the liquid, out of cohesive and adhesive forces, which force is dominating? So, surface tension property is because of cohesive forces, point number 1. It is because of force of cohesion, and it is a surface property. That means this does not act inside the liquid. It is something like absorption and adsorption, chemistry. Adsorption में the particles they stick outside on the surface, not inside, right? Whereas absorption takes place throughout. Absorption is a bulk phenomenon. It's taking place throughout. So mind you, it is a surface phenomenon or it is a surface concept, right? अभी बेटा सोच के आंसर देना, क्योंकि अभी मैं थोड़े नए पॉइंट्स कवर कर रहा हूँ.
Can I say surface tension property? It is dependent on the liquid. So depending on the type of the liquid, these particular values will change. For example, surface tension of oil या तो soap solution is approximately 25 dyne per centimeter. 25 dyne per centimeter. ये सब मैं round figure लिख रहा हूँ. मतलब मैं nearest 5 या तो nearest 0 लिखने की कोशिश करूँगा. Surface tension of soap is found to be around approximately 30 dynes per centimeter. Surface tension of water is approximately 70 dynes per centimeter. It is between 65 and 72. Surface tension of mercury is approximately between 500 and 550. So most of the problems में they give 535. We take it as 540. As you observe, मैं या तो last में 5 लिख रहा हूँ या तो 0 लिख रहा हूँ और approximately 4 sure लिख रहा हूँ. मतलब most of the problems में you will see these values. And most of the times they give you these liquids. Rarest of rare में sometimes they mention kerosene, sometimes they mention glycerin. So they will give you the value of this. Secondly, ध्यान से देखो ये सारे values मैंने dynes per centimeter में लिखा है. And you know how to convert dyne per centimeter into Newton per meter square. Yes or no? 1 dyne per centimeter is 10 raised to 5 minus Newton upon 10 raised to minus 2 meter. That means it is 10 raised to minus 3 Newton per meter. मतलब आपको ये ऊपर की जितनी भी वैल्यूज है अगर वो न्यूटन पर मीटर में चाहिए then go for a multiplier of 10 raised to minus 3. Yes or no? 1 Newton per meter is 1000 dyne per centimeter. या तो 1 dyne per centimeter is 1 upon 1000 Newton per meter. And these are standard values. अभी सोच के आंसर देना बेटा. These are the values at NTP. टेम्परेचर बढ़ेगा, कॉमन सेंस. टेम्परेचर बढ़ेगा तो सरफेस टेंशन बढ़ेगा कि कम होगा कि कांस्टेंट रहेगा. लॉजिक बेटा. सबसे ऊपर का वर्ड इंपॉर्टेंट है. मैंने वाटर लिया रूम टेम्परेचर, अभी मैंने उसको गर्म करना शुरू किया 30 डिग्री 35 40 45. व्हाट विल हैपन? द मॉलिक्यूल्स विल गो अवे, कोहेसिव फोर्स विल रिड्यूस, सरफेस टेंशन विल रिड्यूस. व्हाट इफ आई रीच द बॉइलिंग पॉइंट? लिक्विड स्टेट ही गायब हो गया. और हम लोगों ने बोला है कि सरफेस टेंशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड. लिक्विड स्टेट ही गायब हो गया. तो व्हाट कैन यू से अबाउट सरफेस टेंशन of boiling water, of boiling oil? Because the molecules इतने दूर जा चुके हैं that they are more than this distance now. They can't influence each other. Now there is a word in thermodynamics, critical point. Critical point of water is about 212 degrees Celsius. So critical temperature is always more than boiling temperature. तो अगर बॉइलिंग पॉइंट पे सरफेस टेंशन 0 होता है तो क्रिटिकल पॉइंट पे भी 0 है, बिकॉज क्रिटिकल पॉइंट कम्स आफ्टर दैट. क्रिटिकल पॉइंट का मतलब ये होता है कि बियॉन्ड दिस इफ यू हीट अ लिक्विड, राइट, इट विल नेवर कम बैक टू लिक्विड स्टेट अगेन. मींस इट इज परमानेंटली डिफॉर्म्ड, इरिवर्सिबल चेंज. मैंने बॉइलिंग पॉइंट पे गया और मैंने स्टॉप कर दिया तो गैसियस स्टेट से वापस लिक्विड स्टेट पे आ गया. यस सर. Very hot water, warm water at room temperature आ रहा है वापस. लेकिन अगर मैं क्रिटिकल पॉइंट क्रॉस किया, राइट, तो वापस नहीं आएगा. सो क्रिटिकल टेम्परेचर इज द टेम्परेचर बियॉन्ड व्हिच इफ अ लिक्विड इज हीटेड विल नेवर कम बैक टू लिक्विड स्टेट. ये डेफिनेशन मैं आप लोगों को लिखवा दूंगा. क्यों? क्योंकि कभी कभी वो लोग एमसीक्यूज में बॉइलिंग पॉइंट वर्ड यूज नहीं करते, क्रिटिकल टेम्परेचर वर्ड यूज करते. तो स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि ये क्रिटिकल टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर है कि बॉइलिंग पॉइंट के नीचे, ऊपर. तो अगर बॉइलिंग पॉइंट पे सरफेस टेंशन 0 होता है, कैन यू से क्रिटिकल टेम्परेचर भी 0? यस और नो? सो व्हाट कैन यू से अबाउट दिस पॉइंट? एट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, एट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, कैन आई से सरफेस टेंशन इज 0? कैन आई से as temperature increases, surface tension force decreases? अब ध्यान से सुनो. On mixing the impurities, what will happen? इसमें भी 2 टाइप्स है. अमेजिंग 2 टाइप्स, राइट. बहुत सारे बुक्स में ये मेंशन नहीं किया है क्योंकि वो लोग वर्ड खाली यूज करते हैं impurities.
अगर मैं हाईली सोल्यूबल इंप्योरिटी लेता हूं, एग्जाम्पल शुगर, एग्जाम्पल सॉल्ट, राइट, तो अगर ये लिक्विड मॉलिक्यूल्स है, अगर ये लिक्विड मॉलिक्यूल्स है, then highly soluble impurities they get trapped in between these molecules, right, in between. मतलब suppose ये liquid molecules है, this is liquid molecule, 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 this is liquid molecule. Highly soluble impurities they get trapped here and they increase the bonding, right? So highly soluble impurities will increase surface tension. Sparingly soluble salts, sparingly soluble salts, they are not highly soluble, the particle size is little more. So if this is the liquid molecule, 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 right? तो वो ये गैप में नहीं आते, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में आते हैं, they come in between the molecules, so they behave like a barrier, right? That means they increase the gap between the molecules. That means the molecules will go little away, and therefore the surface tension will decrease. I repeat, highly soluble impurity में ये डायग्राम आएगा, highly soluble impurity में, and sparingly soluble impurity में ये डायग्राम आएगा. क्योंकि लोग बुक में डायग्राम नहीं देते, तो अल्टीमेटली स्टूडेंट्स रट्टा मारते कि okay, highly soluble means it increases, sparingly soluble means it decreases. But why that they don't understand? Is that clear? We actually speaking study this at MSc level very much in depth with the help of experiments. ये जितने भी मैं diagrams बना रहा हूँ, ये हम लोग actually experiment perform करते हैं, और इधर मुझे इसको खत्म करने में 4 से 5 लेक्चर लगते हैं, वहाँ हमको 10 से 12 लेक्चर लगते हैं, and that was full size lecture, 2.5 hours with experiments. So you can understand. Means you have to observe this with the help of very detailed instrument. It's called traveling microscope, which is much accurate than microscope lasers. Got it? अभी मैंने सिर्फ आधा पेज कवर किया है, definition of surface tension in terms of force. लेकिन synopsis देखोगे तो I think I have reached up to about 14-15 points. You can check that. एक और फॉर्मूला कवर कर लूँ, because इसके लिंक में ही एक और फॉर्मूला कवर करता हूँ. What is the first formula, students? What is the first formula? Surface tension is force upon length. Mind you, the second formula is surface tension is work upon area. क्योंकि multiply and divide by length करूँगा मैं. The work so done is going to be stored as energy. So it is energy upon area, या तो it is potential energy upon area. Because this is making the molecule का configuration change, positions change. The molecules don't move. It is immobile. Are you getting this? So second formula is this. Apply common sense. इसके हिसाब से फिर अपना यूनिट क्या होना चाहिए? पहले का यूनिट है न्यूटन पर मीटर, बराबर ना? तो दूसरे का यूनिट क्या होना चाहिए? जूल पर मीटर स्क्वायर. So surface tension का यूनिट is जूल पर मीटर स्क्वायर also. और एल्स फिर क्या होना चाहिए? न्यूटन पर मीटर इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन मीटर, राइट? सो इज इट kilogram upon second square also? After making you read this article theory pages wise, I will make you read the list of formula and then synopsis. No, I have not yet. I have not covered only page number 2. I have covered page number 4 as well. You can check. I have covered page number 4 completely. और पेज नंबर 5 का मैंने सिर्फ लास्ट बॉक्स कवर किया. चेक करो, फॉर्मूला, ओनली फॉर्मूला. मतलब वो पार्ट अभी तक सिखाना बाकी है. योर टाइम स्टार्ट्स. पेज नंबर 3 and 4 स्टार्ट. पेज नंबर 3 and 4. पेज नंबर 14 भी कवर किया मैंने. इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज. पेज नंबर 3 and 4 के बाद आप 4 के बॉटम पे लिखो. 4 के बॉटम पे लिखो. Immediately after this, read page number 14. Effect of impurities and temperature on surface tension. Page number 4 के bottom पे लिखो. Immediately after this, refer page number 14.
Hopefully you're done with definition. Page number 3. थोड़ा टाइम बेटा वीडियो पॉज करो. The easiest way of understanding page number 4 is check the diagram. Do you see 3 molecules? Check first 3 points. Are they talking about these 3 molecules? Point number 1 is talking about molecule A. Point number 2 is talking about molecule B. Point number 3 is talking about molecule C. Do you think you need to read this now? No. Verbally try karo. What can you say about molecule A in the diagram? Net force is 0. Molecule A का सिर्फ last time पढ़ो. Net force on molecule A is 0. अभी molecule B, the net force is not 0. At molecule C also net force is not 0. तो कौन से molecule पे force सबसे ज़्यादा है? Right? अभी balancing के लिए एकदम ध्यान से सुनो. मुझे कोई भी सिस्टम में स्टेबिलिटी चाहिए. स्टेबिलिटी तो एनर्जी मिनिमम चाहिए कि मैक्सिमम? फैंटास्टिक, सुपर. अगर मुझे कोई भी सिस्टम में स्टेबिलिटी चाहिए तो पोटेंशियल एनर्जी शुड बी मिनिमम कि मैक्सिमम. अब अगर मुझे एनर्जी मिनिमम चाहिए तो सामने एरिया मिनिमम चाहिए, क्योंकि तो ही सरफेस टेंशन कांस्टेंट रहेगा. T is constant of proportionality, right? T is constant of proportion. मतलब ये बंदा कांस्टेंट है, ये बंदा कांस्टेंट है. मतलब फोर्स बढ़ेगा क्योंकि लेंथ बढ़ा है, फोर्स कम होगा क्योंकि लेंथ कम हुआ है. एनर्जी बढ़ेगा अगर एरिया बढ़ा है. अभी मुझे एनर्जी कम चाहिए, मतलब मुझे एरिया मिनिमाइज करना चाहिए. एंड देयरफॉर दिस, मतलब अब तक हम लोग सिर्फ बोलते थे, अब हम लोग इसको मैथमेटिकली प्रूव कर रहे हैं. वापस बोलूं कि समझा? एक बार वापस बोलूं. फोर्स इज डिपेंडेंट ऑन लेंथ. more the force, more the length, more the या तो other way around, more the length, more the force, less the length, less the force. That means can you say T is constant of proportionality? So for a given liquid, surface tension is constant, right? For this to be maintained, what you should not change? You should not change temperature, and you should not change the purity of the liquid. अगर मैंने पानी में salt डाला तो surface tension change हो जाएगा. पानी में पोटेशियम डाइक्रोमेट डाला तो सरफेस टेंशन चेंज हो जाएगा. पानी में शुगर डाला तो सरफेस टेंशन चेंज हो जाएगा. That is why high sugar in your body, the fluid pressure will change. It will screw you up, right? High value of glyceric acid, surface tension will change. You will be screwed. Your kidneys are facing the problem now. Are you getting this? The bladder is facing the problem, and so on. समझ में आया? Liquid pressure कितना important है अपने body में? Got it? तो अभी मेरा दूसरा फॉर्मूला ये है, फोर्स अपॉन लेंथ को मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय डिस्प्लेसमेंट कर रहा हूं. मेरा दूसरा फॉर्मूला ये है, दैट मींस सरफेस टेंशन इज वर्क अपॉन एरिया आल्सो. यस और नो? बिकॉज़ इट इज वर्क अपॉन एरिया, दैट मींस इट इज एनर्जी अपॉन एरिया, दैट मींस इट इज यू अपॉन ए. अगर मुझे स्टेबिलिटी चाहिए तो एनर्जी मिनिमाइज करना है. एनर्जी मिनिमाइज करना मतलब एरिया भी मिनिमाइज करना, बिकॉज़ रेशियो कांस्टेंट रहना चाहिए. दैट्स व्हाई एरिया शुड बी मिनिमाइज. इज दैट वेरी क्लियर? Sure. Pause. You will revise. After you have revised page number 4, please move on to page number 14. Do you see effect of temperature on surface tension? Do you see effect of impurities on surface tension? Please move on to page number 14 and read those two articles.
Are you done with that also? Yes, sir. Okay. Now I want you to be on page number 17. First formula टिक करो. Second formula प्रूव नहीं किया है मैंने, खाली उसको मॉडिफाई किया f upon l. अभी तक ये मैंने प्रूव नहीं किया बट टिक कर सकते हो. Second formula टिक करो. Now I want you to be on page 18, 19, 20. Let me check. Are you on page 21? एकदम ध्यान से देखो बेटा. I have covered point numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 18 तक किया है एक्सेप्ट 13. 13 पॉइंट अभी मैं कर रहा हूँ. 13 पॉइंट में कर रहा हूँ. खाली 13 को कुछ मत करना. अभी कवर कर लेंगे. 1 से लेके 18 तक सब टिक करो. 13th मत पढ़ो, बाकी सब पढ़ो. Your time starts now. सिनॉप्सिस शुरू हो चुका है. ध्यान से पढ़ने का एकदम. राइट? इसके ऊपर से थियरी क्वेश्चन भी आते हैं. ये चैप्टर के ऊपर से थियरी क्वेश्चन के भी बहुत ज्यादा ब्राइट चांसेस है. पॉइंट नंबर्स 1 to 18 एक्सेप्ट 13 एवरीथिंग. वीडियो पॉज प्लीज. सरफेस टेंशन के जो वैल्यूज हमने प्रिंट करके दिए ना, वो लर्न करने. अभी उसका रीजन सुनो क्यों. इफ यू रिमेंबर दिस वैल्यूज, advantage, I will just take you to one of the MCQs maybe, and I will prove it. I will prove my point. कहीं पे तो सरफेस टेंशन ढूंढना है, और मान लो मैंने ऐसे बोल दिया कि 8 water droplets combine together to give you one big water drop. Find out the surface tension. अभी मैं वैल्यू दे रहा हूँ 25, 30, 70 and 540. मुझे क्वेश्चन में ही दिख रहा है वाटर ड्रॉप. मुझे क्वेश्चन में वर्ड दिख रहा है वाटर ड्रॉप. Why am I solving the problem? I know surface tension of water is around 70. एडवांटेज समझा? इसलिए 4 स्टैंडर्ड चीजों की सरफेस टेंशन वैल्यूज याद रखो. ऑयल, सोप, वाटर एंड मर्क्यूरी. राइट? इफ यू आर लकी, पता चला वो प्रॉब्लम सॉल्व करने में मे बी 60 सेकंड लगते, 70 सेकंड लगते हैं. लेकिन अगर आपने ध्यान से देखा कि वर्ड वाटर है और वैल्यूज दूर दूर है, अगर मैं ऐसे दूं ना 65, 70, 75, 80, तो चांस नहीं लेने का. बिकॉज सरफेस टेंशन चेंजेस विथ टेम्परेचर. राइट? तो लोअर टेम्परेचर पे सरफेस टेंशन हाई है, हायर टेम्परेचर लोअर. तो 65 से 75 की रेंज में, मतलब अगर मैंने ऑप्शन दिया 65, 70, 75, 80 तो सॉल्व करने का. लेकिन अगर मैंने ऑप्शन दिया 25, 65, 115 एंड 325 तो सॉल्व ही नहीं करना, क्योंकि मैंने वाटर वर्ड दिया है क्वेश्चन. सो बेटर टू रिमेंबर. राइट? प्लीज स्टार्ट रीडिंग सिनॉप्सिस पॉइंट्स. वीडियो पॉज प्लीज. Point number. Another beautiful question, really beautiful question just brought into my notice. Assignment number 3 का question number 22 देखो. 23. Assignment 3 question 23. Assignment 3 question 23 page 35. खाली last line पढ़ो. You have to find out the ratio of surface tension of mercury to water. 1 minute. Mercury to water ना, मतलब this upon this, तो ये 77 जा 490. मेरा आंसर 7 पॉइंट समथिंग होना चाहिए. अभी ऑप्शंस देखो, अभी ऑप्शंस देखो. Without solving you can solve. Why? Because you know the standard values. It is better to remember synopsis point number. जो भी पॉइंट में स्टैंडर्ड वैल्यूज दिया ना सरफेस टेंशन के, या तो उधर वो पॉइंट के बाजू में लिख के रखो सम ऑफ द स्टैंडर्ड वैल्यूज ऑफ सरफेस टेंशन. उधर बाजू में लिख के रखो. मस्ट रिमेंबर दिस वैल्यू. पॉइंट नंबर 15 में जो वैल्यूज प्रिंट करके दी है, मस्ट रिमेंबर. एडवांटेज समझा बेटा? बाजू में लिख के रखो. फॉर एग्जांपल असाइनमेंट 3 क्वेश्चन 23 can be solved with this knowledge without solving. For example, assignment 3 question 23 can be solved with this without solving. Otherwise उसकी calculation में 70-80 seconds लगता है. I will prove it. I will solve it and prove it. Right? अभी एक काम करो, असाइनमेंट 3 के क्वेश्चन 23 पे जाओ और वहां पे लिखो कैन बी सॉल्व डायरेक्टली
if we remember the standard values. Can be solved directly if we remember the standard values. Anyways, continue revising synopsis points 1 to 18 except 13. Video pause. Okay. Besides 17th point of synopsis, you write critical temperature of the liquid. Critical temperature of the liquid is that value of temperature. Critical temperature of a liquid is that value of temperature beyond which if the liquid is heated, it will be permanently going to gaseous state and cannot be liquefied back. If you want, you can simply write it cannot be liquefied back. It cannot be liquefied back. For example, critical temperature of water is around 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तो अपना वो बॉइलिंग पॉइंट का कन्वर्जन था फ़ारेनहाइट स्केल. It's more than 250. Critical temperature of water is more than 250 डिग्री सेल्सियस. मतलब 100 के बियॉन्ड जाओगे तो वो स्टीम में कन्वर्ट होता है, फिर स्टीम में रहता है. उससे भी बियॉन्ड है तो इट विल नेवर कम बैक. इसका मतलब ये होगा कि critical temperature of water is more than boiling point of water. So what is surface tension of water at boiling point? So obviously at critical point also it is C. अब एकदम ध्यान से सुनो, ये लेंथ इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों था? Why this L is very important, right? Because when the problems come, you have to use L. Now what is the meaning of L? L is not the meaning of length of this line. How can you measure the length of the line? Not possible. Line is infinite. L का मतलब देखो मैंने क्या लिखा है, it is effective length in contact with free liquid surface. अब एकदम ध्यान से सुनो खाली और मुझे सोच के आंसर दो. यहाँ पे मैंने लिखा है what is the shape of the body which you are taking. यहाँ पे मैंने लिखा है what is the effective length when that body is floating. और यहाँ पे मैंने लिखा है what is the effective length when that body is lifted. अब ये रिंग है, बुक्स एकदम बंद, क्योंकि एक बार ये समझ में आ गया सब कुछ समझ में आएगा, राइट? ये रिंग है. My palm is water surface. That means this ring is floating on it. That means it should not be this thick ring. Otherwise it will sink. If you try to put this on water surface, it will sink. It should be as thin as possible and as light as possible. Yes or no? If the ring is floating, सोच के आंसर देना. What is the effective length in contact? Mind you, ये water है, ये water है, right? और ये 2 pi r है. So can I say there is water inside also and there is water outside also, and this is in contact with air. मैंने बोला है कि what is the effective length in contact with FLS, right? तो बेटा अगर ये पानी का बॉटल है तो इसका टॉपमोस्ट सरफेस एयर के कांटेक्ट में ना, इसके नीचे वो लिक्विड के कांटेक्ट में, तो नीचे वाला पार्ट को हम लोग FLS नहीं गिन सकते, सिर्फ ऊपर वाला पार्ट, राइट? माई पाम is a free liquid surface. The ring is floating. तो अगर मुझे L लेना है तो यहाँ पे मैं L क्या लूंगा? 2 pi r1 plus 2 pi r2, क्योंकि ये रिंग का बाहर का पार्ट भी वाटर के कांटेक्ट में है और अंदर का पार्ट भी वाटर के कांटेक्ट में, तो क्या लूंगा मैं? 2 pi r1 plus 2 pi r2. But because it should not be thick, that means r1 is equal to r2. That means it should be 2 times 2 pi r. 4 pi r बोला ना आप लोगों ने. सोच के इधर क्या आंसर आया? If it is a circular ring floating, कभी कभी वो लोग वर्ड रिंग के बदले फ्रेम बोलते हैं, फ्रेम, राइट? डिस्क, स्क्वायर रिंग नहीं बोल सकते ना हम लोग, स्क्वायर फ्रेम बोलना पड़ेगा, स्क्वायर प्लेट. अभी बेटा ये दोनों का फर्क समझो. 1 2, ये डिस्क है ना, रिंग फ्लोटिंग. व्हाट इज द इफेक्टिव लेंथ इन कांटेक्ट? 2 times 2 pi r.
डिस्क फ्लोटिंग 1 times 2 pi r. 1 time 2 pi r. Very good. Perfect. स्क्वायर फ्रेम फ्लोटिंग, स्क्वायर फ्रेम, अगर ये स्क्वायर फ्रेम होता, वायर 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 2 times 4l. वेरी गुड. फ्रेम हुआ तो ट्वाइस पेरीमीटर और प्लेट हुआ तो 1 times पेरीमीटर. फैंटास्टिक, वेरी गुड. चलो वापस एक बार. सर्कुलर रिंग फ्लोटिंग, कैन आई से 2 times 2 pi r? But circular plate floating, is it 1 time 2 pi r? बराबर. अभी सोच के, ये रिंग सोप सोल्यूशन पे फ्लोट हो रहा था, सोप सोल्यूशन पे. अभी मैंने इसको लिफ्ट किया, मतलब बाहर का लिक्विड गायब हो गया क्योंकि उसको बाउंड्री नहीं मिला. मतलब लिक्विड फिल्म सिर्फ इधर है, मतलब ये वाला. अभी सोच के आंसर लो. आई हैव लिफ्टेड इट. What should be the answer? Again 2 times 2 pi, क्योंकि अब ये ऊपर नीचे कांटेक्ट में, पहले अंदर बाहर कांटेक्ट में था. अभी मैंने इसको लिफ्ट किया तो बाहर वाला चला गया, लेकिन अभी एयर ऊपर भी है और एयर नीचे भी है. मतलब अगर ये लिक्विड फिल्म गिनता हूं मैं, तो ये एक FLS हुआ, ये दूसरा FLS हुआ. बोलो क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि whether the frame is floating or it is lifted. Can I say my answer is the same? Yes or no? तो बेटा circular frame lifted, answer is 2 times 2 pi r. Circular disc lifted, 0. लिक्विड फिल्म तो ट्रैप तो होना चाहिए ना किधर. अच्छा अभी सोच के बोलना. ये सर्कुलर प्लेट है और इधर एक छोटा सा होल है, इधर ये ब्लू वाला होल है और ये फ्लोट हो रहा है. सोच के आंसर देना बेटा. ये फ्लोट हो रहा है, क्या आंसर है? 2 pi r No. plus 2 pi r2. 2 पाई छोटा प्लस 2 पाई बड़ा, क्योंकि ये दोनों के रेडियस सेम नहीं है और ये पार्ट होल है. समझा कि वापस बोलो? राइट. सो अ सर्कुलर प्लेट विथ अ होल ऑफ रेडियस स्मॉल r इज फ्लोटिंग. आंसर 2 पाई छोटा प्लस 2 पाई बड़ा. अभी एकदम सोच के आंसर देना, एकदम, क्योंकि ये सबसे ट्रिकी है. A circular plate with a hole was floating on soap and now it is lifted. 2 into छोटा. वेरी गुड. 2 into 2 pi, क्योंकि वो होल में लिक्विड फिल्म ट्रैप होगा ना. आर यू गेटिंग दिस? तो ये फिर इसके जैसा हो गया. यस और नो? बस बेटा इसके बाद का सब कुछ सिंपल है. स्क्वायर फ्रेम फ्लोटिंग, बोलो. Square frame floating, twice perimeter. Is it twice 4l? Square frame lifted. 2 times 4l. Same answer. Same answer. Yes or no? Same answer. That means this is also twice 4l. इधर क्या गिनने का? अंदर बाहर. इधर क्या गिनने का? ऊपर नीचे, या तो फ्रंट बैक. फैंटास्टिक. चलो बेटा स्क्वायर प्लेट 4l. वेरी गुड. 0. व्हाट अबाउट दिस? 0. अभी मैं आगे के नाम नहीं लिख रहा हूं, ट्राई करो. रेक्टेंगुलर प्लेट फ्लोटिंग, प्लेट रेक्टेंगुलर प्लेट ट्वाइस ऑफ l plus b. रेक्टेंगुलर फ्रेम फ्लोटिंग ट्वाइस ऑफ l plus b. अंदर और बाहर. रेक्टेंगुलर फ्रेम लिफ्टेड 4 times l plus b. रेक्टेंगुलर प्लेट लिफ्टेड. फैब्युलस. वेरी गुड. समझ में आया बेटा? फ्रेम हुआ तो ट्वाइस पेरीमीटर और प्लेट हुआ तो 1 टाइम पेरीमीटर. फ्रेम हुआ तो ट्वाइस पेरीमीटर और प्लेट हुआ तो 1 टाइम पेरीमीटर. एकदम अच्छे से समझा, एकदम फाइनल सोच के बोलना. ये मेरे पास रेक्टेंगुलर प्लेट है और ये ऐसे फ्लोट हो रहा है. व्हाट इज इफेक्टिव लेंथ? L plus B plus L plus B. लेकिन इसको मैं ऐसे फ्लोट करवा रहा हूं, मतलब ऐसे ये टच कर रहा है वाटर से. ऊपर मैंने स्ट्रिंग बांधा हुआ है. अभी बोलो. L plus T plus L plus T. L plus
T प्लस L प्लस T, इसको बोलते हैं लार्जेस्ट एरिया इन कॉन्टैक्ट। अब वो लोग कंफ्यूज कैसे करते हैं मालूम है? क्वेश्चन में वर्ड यूज करते हैं लार्जेस्ट एरिया इन कॉन्टैक्ट, लेकिन मेरे प्रॉब्लम में तो F/L है ना, तो मुझे तो इफेक्टिव लेंथ लिखना है, एरिया नहीं लिखना है। एरिया लिखना होता तो मैं L into B लिखता। मैं क्या बोल रहा हूँ? The plate is kept on the surface of the liquid in such a way that the largest area is in contact. Effective length was twice of L plus B. इसको बोलते हैं longest side in contact। इसको बोलते हैं longest side in contact। बोलो L plus T plus L plus T। समझा बेटा? अब एकदम फाइनल आंसर सुनो। स्क्वायर फ्रेम का मेरा आंसर क्या था? स्क्वायर फ्रेम, और मैंने ऐसे रखा था। अब वो स्क्वायर फ्रेम में ऐसे रख रहा हूं, मतलब ये स्क्वायर फ्रेम ऐसे रखा। ये एक डायग्राम में मैंने स्क्वायर फ्रेम ऐसे रखा और एक डायग्राम में मैंने स्क्वायर फ्रेम ऐसे रखा। ये सरफेस ऑफ द लिक्विड है, इसमें स्क्वायर फ्रेम फ्लोट हो रहा है और इसमें स्क्वायर फ्रेम टच हो रहा है, टच, राइट? तो इधर इफेक्टिव लेंथ क्या और इधर इफेक्टिव लेंथ क्या? इधर इफेक्टिव लेंथ हुआ L प्लस 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 L, 8 है। अभी ये जो ऐसा था ना, ऐसा, ये मैंने ऐसा कर दिया, तो ये गया, ये गया, ये गया, 2L। Therefore, if the needle is floating on surface of water, the effective length is 2L, because needle is like one of the sides of a square frame. So if it is a needle floating, then what is the answer? 2 times L. What if it is a needle with a hole which you are using as a sewing needle? उसमें एक होल होता है ना, और वो होल सर्कुलर और फ्लोट हो रहा है। 2L प्लस ओनली 2 पाई आर बेटा, क्योंकि बाहर का पार्ट तो लेंथ है ना। अभी ये नीडल है, बराबर? ये चलो ऐसा बना लिया, जो मतलब जो रियलिटी में दिखता है। ये नीडल है और इधर होल है और ये फ्लोट हो रहा है, मतलब पानी इधर है, पानी इधर है, पानी इधर है, पानी इधर भी है, और ये पार्ट एयर के कांटेक्ट में। तो ये L हुआ, ये L हुआ और ये 2 पाई हुआ। अभी मैं अंदर बाहर नहीं ले सकता ना, क्योंकि अभी मैं इसकी बात थोड़ी कर रहा हूँ, अभी मैं इसकी बात थोड़ी कर रहा हूँ, अभी मैं इसकी बात कर रहा हूँ, अभी मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये नीडल है, हाईली मैग्नीफाइड डायग्राम, L L 2 पाई। समझाओ लोग कंफ्यूज कैसे करते हैं? सोचो मैंने वर्ड क्या यूज किया? लार्जेस्ट एरिया इज इन कॉन्टैक्ट। कैलकुलेट द फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। लार्जेस्ट एरिया इज इन कॉन्टैक्ट बोला तो स्टूडेंट के दिमाग में क्या आएगा? एरिया वाला फॉर्मूला यूज करना है। एरिया वाला फॉर्मूला मैं तब यूज कर सकता हूँ जब मुझे वर्क क्या तो एनर्जी पूछना है। मुझे तो फोर्स पूछा गया है, मतलब मुझे लेंथ विजुअलाइज करना चाहिए। विजुअलाइजिंग लेंथ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अभी लास्ट पार्ट, 13th का सेकंड पार्ट। अभी तक हम लोग 13th का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, अभी 13th का सेकंड पार्ट। कोई भी वर्ड आया, ड्रॉप, ड्रॉप, वाटर ड्रॉप, mercury drop, right? Oil drop. Then what is the effective surface area? 4 pi r square. Very good. But what about soap bubble? Very nice, perfect. Because ये hollow sphere है, air अंदर भी और बाहर भी है. Fantastic, perfect. Water drop, effective surface area. Soap bubble. Mercury drop. एयर बबल, मुझे मालूम था गलती कर रहा हूं, इसलिए मैंने जानबूझ के बबल ड्रॉप पूछा। तो तुम्हारे दिमाग में क्या है? बबल मतलब 8 पाई स्क्वायर, ड्रॉप मतलब 4 पाई स्क्वायर। एयर बबल एयर में थोड़ी फॉर्म होता है, वो लिक्विड के अंदर फॉर्म होता है। जैसे वो सरफेस पे आके गायब हो जाता है। एयर विद एयर, होमोजीनियस मीडियम, मतलब सोप बबल इज 8 पाई स्क्वायर, बट एयर बबल इज so any type of a drop or air bubble, the effective area is 4 pi r square, but soap bubble is 8 pi r square. Is that very clear? Point number 13 covered. Please check. Point number 13 covered. नीडल को ऊपर उठाया तो सिर्फ 2 into 2 pi r, क्योंकि बाहर का लेंथ गायब हो गया, 2L गायब हो गया।
चलो बेटा 3 2 1 आपको पॉइंट नंबर 13 का पहला सिर्फ लेफ्ट टेबल पढ़ना है, फिर सिर्फ राइट टेबल पढ़ना है। पहले सिर्फ लेफ्ट, बिकॉज लेफ्ट टेबल में द लेंथ वर्ड इज इंपॉर्टेंट। हाइलाइटर है सबके पास? 13 का लेफ्ट साइड का टेबल में लेंथ वर्ड को हाईलाइट करो और 13 का राइट साइड का टेबल में एरिया को हाईलाइट करो। लेंथ का यूनिट इज मीटर, एरिया का यूनिट इज मीटर स्क्वायर। प्लीज बी केयरफुल। एनी टाइप ऑफ अ लिक्विड ड्रॉप 4 r square, air bubble 4 r square, soap bubble 8 r square. Is that very clear? Sure. चलो point number 13 पढ़ो। ये चैप्टर को बहुत ही ज्यादा ध्यान से हैंडल करना है। उसका रीजन, अब तक जितने भी चैप्टर्स हुए हैं, संडे कहीं ना कहीं संडे एग्जाम के बहाने आपका वो प्रिपरेशन हो जाता है। जो भी चैप्टर सबसे लास्ट में आता है, कोई ना कोई चैप्टर तो लास्ट में आता है, कोई सिलेबस का उसको थोड़ा कम प्रैक्टिस हुआ होता है, राइट? सो नॉर्मली वी कीप मोर थियोरेटिकल एंड लेस न्यूमेरिकल चैप्टर्स एट द एंड। यू मस्ट हैव नोटिस मैंने एक्सरे लास्ट में रखा था, फोटोइलेक्ट्रिक वेव पार्ट लास्ट में रखा था। यस और बिकॉज दे आर थियोरेटिकल। एक्सरेज में प्रॉब्लम देखोगे तो खाली वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला था 1/λ इज r square times z minus b square times r times, right? So please handle this chapter with great care and trust me, it is very interesting, very useful in practical life. PCB के सिलेबस में ऐसे चैप्टर्स होने चाहिए कि जो आपको फ्यूचर में मेडिकल साइंस में यूज होते हैं। एक्सरे मशीन कैसे दिखता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप कैसे, दे शुड इंट्रोड्यूस मशीन्स टू यू, right? And they should expose you to how to use those machines. But anyways, unfortunately, our education committee members are बायोलॉजी और पीसीएम का फिजिक्स अलग होना चाहिए, अलग। बायोलॉजी के स्टूडेंट्स को मोर ऑफ प्रैक्टिकल्स होना चाहिए रादर देन मगिंग अप। अभी तुम लोगों को पोली और वो सब जो प्रॉब्लम सॉल्व करते हो वो सिर्फ ऑर्थोपेडिक सर्जरी में काम नहीं आता है। हार्ट में किधर पोली और सब सिस्टम में एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक के ऊपर दो ब्लॉक के। बैंकिंग ऑफ रोड्स को मेडिकल साइंस से क्या मतलब है? ड्राइव से, डोंट ड्राइव मच सो दैट यू गो टू हॉस्पिटल। ये थोड़ा स्टूपिड टाइप का है। इसका रीजन सिर्फ ये है कि अलग अलग स्टेट्स है, अलग अलग बोर्ड है, सबको अपने अपने वोटर्स को खुश करना होता है। तो when NEET was introduced, तमिलनाडु was exactly opposite। हमको NEET चाहिए, हमको CET, हमको हमारे स्टूडेंट हमारे स्टेट में चाहिए। तो अभी ये तो you know when the states fight internally, मतलब एक ही कंट्री के अंदर 28 कंट्री होगा ना, ऐसा हो गया फिर। That means we are not united. That's the reason they wanted one board, one nation, one exam. So at least it is done for medical science. We are waiting that it should be done for engineering also. अभी प्रॉब्लम क्या है? JEE अलग पढ़ाओ, CET अलग पढ़ाओ, तुम्हारा एग्जाम जैन में, बाद में तुम्हारा एग्जाम अप्रैल में, फिर वापस तुम्हारा एग्जाम जून में। हेडेक है, टीचर्स के लिए हेडेक है, स्टूडेंट्स के लिए तो ठीक है, टीचर्स के लिए हेडेक है। पॉइंट नंबर 13 हो गया। ओके, अभी होमवर्क फॉर यू, फर्स्ट 10 MCQs ऑफ असाइनमेंट, फर्स्ट 10 एंड रिवाइज ऑल दिस। अच्छा लिसन, मेरा लेक्चर नंबर 2 जो है ना वो प्योरली थियोरेटिकल, एंगल ऑफ कांटेक्ट वाला। सो यू वांट टू सी दैट वीडियो एंड कम? नो चलो ठीक। तो फिर मैं सिर्फ के का वीडियो भेजता हूँ, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल। अच्छा, इसमें प्रैक्टिस पेपर में कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे ना। टुडे आई हैव टॉट यू ओनली दिस फॉर्मूला ऑफिशियल। ये फॉर्मूला मेरा प्रूव करना बाकी है। दिस इज पेज नंबर 5 ऑफ योर नोट्स। तो ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में प्रूव करता हूँ। असाइनमेंट 1 फर्स्ट 10 प्रॉब्लम इज द होमवर्क फॉर माय नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय, सी यू। मेरे सारे लेक्चर्स, एक मिनट, मेरे सारे लेक्चर्स यही स्टाइल में रहेंगे, बिकॉज इसके बाद में मेरा थर्ड बैच होता है रिपीटर बैच। सो वन स्लॉट विल बी 7 to 9, second slot will be 9 to 11. Then after that I have to take repeater. So please come this way only whenever my lecture is announced. Right? If some special, suppose बीच में कुछ गैप आ रहा है, मेरा रिपीटर का लेक्चर बीच में कुछ आ रहा है, then we will specify that very clearly on the board. Okay? Thank you so much.